Hello students, in previous video we have completed unit 14, which is the last unit of the book, and now we will start with the revision. And you know that the units from 10 to 14 will come in the exam. So we will start with the revision of unit 10, that is angles. So in this unit we have learned about angles, what is an angle, how we can name the angle, how we can measure the angle and construct the angles, and the types of angles. So now we will revise all the things again. So here you know about the ray, line segment and a line. So ray means which extends in one direction endlessly, and on the other side there is a end point. One side को end point होता है और दूसरी side को ये endlessly extend होती है, right? And line segment has two end points, and line in which it extends endlessly in both the direction. दोनों side को ये endlessly extend होती है, that is a line. So that we have already learned in our previous class. And now what is an angle? So when two rays with the same endpoint form an angle, two rays होती है और दोनों rays का same endpoint होता है. You know what is a ray? रे होती है जिसका वन एंड पॉइंट होता है और दूसरी साइड को वो एंडलेसली एक्सटेंड होती है. सो टू रेज हम लेते हैं और दोनों के एंड पॉइंट्स हम क्या कर देते हैं, दोनों का सेम एंड पॉइंट होगा. यू कैन सी हियर. तो एंगल क्या होता है? द टू रेज विद द सेम एंड पॉइंट, टू रेज विद द सेम एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल. एंड यू कैन सी हियर इन द पिक्चर दैट which one is an angle. So this is not an angle because here the two rays do not have the same end point, right? Two rays का same end point नहीं है, दोनों के अलग अलग end points है, तो this is not an angle. Here is an angle. So आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर two line segments भी हो सकती है और रेज भी हो सकती है. तो यहाँ पर आपका कॉमन एंड पॉइंट है. टू लाइन सेगमेंट्स का भी अगर सेम एंड पॉइंट होता है दैट इज ऑल्सो एन एंगल. यहाँ पर अगेन टू रेज हैव सेम एंड पॉइंट, सो ये भी एक एंगल फॉर्म कर रहा है. एंड हेयर अगेन देयर इज नो कॉमन एंड पॉइंट, अगेन देयर इज नो कॉमन एंड पॉइंट, नो कॉमन एंड पॉइंट. हेयर अगेन वी हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, सो दिस इज एन एंगल. So जहां पर भी कॉमन एंड पॉइंट होता है either of two line segments or two rays, so that is an angle. So now you do this question for practice. Draw any four angles in your notebook. So you have to draw any four angles. कोई भी आप angles four draw कर सकते हैं. Now the next thing that we have learned is vertex and arms of an angle. So how many arms are there in an angle? There are two arms. These are called arms. And vertex means this is जहाँ पर common end point होता है rays का, that is the vertex, right? जो two rays है उन two rays का जो common end point होता है that is called the vertex, right? And two rays which are forming the angle are called the arms of the angle. So there are two arms in an angle and one vertex. Angle में कितनी arms होती है? Two arms होती है and there is one vertex, right? And next is your naming the angle. How we name the angle. So to name the angle, what we need is the capital letters. We use only capital letters. So
How can we name the angle? First of all, we use a symbol. This angle symbol किसका हो गया? एंगल का सिंबल होता है एंड ये किसको डिनोट करता है? एंगल को, राइट? दिस symbol, this denotes an angle, and we write the name then, and we have to keep it in mind that we always write the vertex in the middle. जो वर्टेक्स होता है, जो कि कॉमन एंड पॉइंट आपको पता है, जो कॉमन एंड पॉइंट होता है रेज का या लाइन सेगमेंट का, दैट शुड बी रिटन इन द मिडल. ये हमेशा मिडल में आएगा, तभी हम एंगल का नेम दे पाएंगे. सो वी कैन राइट दिस एंगल एज एंगल BAC. तो वर्टेक्स कहाँ आएगा हमारा? मिडल में. और वी कैन ऑल्सो नेम इट लाइक CAB. तो इसको किसी भी डायरेक्शन में आप दे सकते हैं, BAC भी बोल सकते हैं और CAB भी बोल सकते हैं. बट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड इज द वर्टेक्स शुड ऑलवेज बी रिटन इन द मिडल. जो वर्टेक्स है वो कहाँ पर लिखना है? हमने मिडल में लिखना है. यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो A है वर्टेक्स, ये कहाँ पर है? सेंटर में है, और यहाँ पर भी सेंटर में है. सो इन दिस वे वी कैन नेम एन एंगल. नाउ here worksheet number 2, write the names of the following angles, and first one is done for you. So here we have to name the angles, so you know how to name the angles. So here either write it LMN or NML. तो कैसे भी आप दे सकते हैं, both are correct. The only thing that we have to keep it in mind is the vertex should always be written in the मिडल. तो यहाँ पर मिडल में लिखा है M, सो दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट इज Q. वर्टेक्स कहाँ पर है? Q पे है. सो वी कैन राइट दिस एंगल एज PQR, और वी कैन ऑल्सो नेम इट लाइक R एंगल. तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंगल का जो ये सिंबल है ये हमारा हमने लगाना है पहले, एंगल PQR और एंगल RQP. इसको RQP भी हम लिख सकते हैं, RQP. बोथ आर करेक्ट, एंड इन बोथ द केसेस वी हैव रिटन द वर्टेक्स इन द मिडल, राइट? सिमिलरली हियर दिस इज ऑल्सो एन एंगल. यहाँ पर 2 रेज है, यू कैन सी हियर, एंड हियर इज द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द रेज. एंड व्हाट इज द नेम? Angle ABC, or we can also write it like angle CBA. So आप कोई भी आप लिखेंगे, both are correct. Similarly, next one, angle XYZ or angle ZYX. Both are correct. Angle FED or angle DEF. So whenever you write the name of the angle, don't forget to write this symbol. ये सिंबल जरूर बनाना है एंगल का नेम से पहले, राइट? एंड देन here is angles are given, and we have to complete the table. So what we have to write? We have to write the vertex and the arms. So you know that there are 2 arms in an angle and 1 vertex. 2 arms hoti hai or 1 vertex, and we have to name them. So here the vertex is at y and arms are yx and yz, because there are 2 rays. और रेज को हम कैसे नेम देते हैं? जहां से एंगल रे स्टार्ट होती है, एंड पॉइंट होता है, उसको हम पहले लिखते हैं वाई, जो एंडलेसली जिस साइड को एक्सटेंड होती है उसको हम बाद में लिखते हैं. सो वाई एक्स वाई जेड, एम एल एम एन, दीज आर द रेज इन सेकेंड एंगल, एंड वर्टेक्स इज एट एम. सिमिलरली हियर वर्टेक्स इज एट ई and the arms are ED and EF. Right now, next is draw the following angles. So you have to draw the these given angles. And how you have to draw? So here the measure of the angle is not given, right? Because we are doing the revision, and you know that how to construct an angle.
ऑफ गिवन मेजरमेंट, कि जो गिवन मेजरमेंट का है वो कैसे हमने ड्रॉ करना है, तो वो भी हमें पता है, कंस्ट्रक्ट करना है. बट हेयर वी हैव टू ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स. तो यहाँ पर हमको मेजरमेंट नहीं दिया है कि कितने मेजर का हमने एंगल ड्रॉ करना है. सो हम कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी मेजर, बिकॉज ये यूनिट आपको पूरी आती है. वी आर डूइंग द रिवीजन एंड यू नो कि कैसे आपने कोई पर्टिकुलर मेजर का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. अब एग्जाम में आपको आता है ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स, और इट इज गिवन इन दिस वे. सो यू कैन ड्रॉ एंगल ऑफ एनी मेजर, क्योंकि यहाँ पर मेजर नहीं दिया है, मेजरमेंट नहीं गिवन है कि कितने डिग्री का बनाना है. इफ द क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस, एंगल एम एन पी इज इक्वल टू 75 डिग्री, राइट. अगर ऐसा गिवन होता देन यू हैव टू ड्रॉ कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एंड नेम इट एम एन पी, राइट. सो हमें एंगल पर्टिकुलर मेजर का बनाएंगे और उसके बाद उसको नेम देंगे एम एन पी. सो दिस यू हैव टू कीप इट इन माइंड. सो यहाँ पर आपको सिर्फ एंगल ड्रॉ करना है और किसी भी मेजरमेंट का कोई भी एंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं. सो द ओनली थिंग इज कि आपने इसमें नेम प्रॉपरली देना है. जो आपका वर्टेक्स है वो कहां पर होगा, एन पे होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मेकिंग एन एंगल लाइक दिस, ये मैं रफ हैंड से बना रहा हूं, बट डोंट ड्रॉ द एंगल इन दिस वे. यू मस्ट ऑलवेज यूज द स्केल यूज करेंगे एंगल ड्रॉ करने के लिए, राइट. सो इसको हम कैसे नेम देंगे, एंगल एम एन, बिकॉज यू नो जो वर्टेक्स होता है वो कहां पर होता है, मिडिल में होता है. सो ये यहाँ पर वर्टेक्स आपका आना चाहिए, एन एंड पी, राइट. सिमिलरली जेड वाई एक्स, सो आप यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी एंगल एंड जेड वाई एक्स. सो वर्टेक्स कहां पर होगा हमारा, वाई पर होगा. सो जेड वाई एक्स. Similarly, you can draw BCD angle of any measure and name it BCD. And now here, how many angles are there in each figure? So you have to count the number of angles. So this you can do easily. Angles जो है, number of angles आपको measure करने हैं. So in this figure you have 4 angles and in this figure we have 3 angles. So again, one angle, this is the second angle, and एक ये एंगल भी बन रहा है जो ये 2 आर्म्स ये ड्रॉ कर बना रही है, दैट इज द थर्ड एंगल. सो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान से करेंगे एंड जब आप एंगल्स काउंट करेंगे, राइट. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रिवाइज हाउ टू measure the angle and how to construct the given angles. Thank you.